Hello everybody, welcome to Oxford Media Services, English with A.W. Walid, first year intermediate course of Federal in Pukhtunkhwa Boards, Alpha Series, Section C. Dear students, as in our previous lectures, we talked about changing the sentences from active into passive and then from passive into active. So in our today's lecture, we will talk about changing the modal verbs into passive, like can, could, would, should, have to, has to, ought to, might, and may. So before going to our today's lecture, dear students, please like, subscribe, click the bell icon and pass comments on our videos so that we come to know that how do you benefit from our video lectures. So let's go into our today's lecture. Okay, as usual, we talked in the tenses about the structures, and the modal verbs, we also follow the structures. But here, modal verbs in passive. First, let me tell you that can we use in present. For what? We use it in present. We use it for ability. When we discuss ability in present, then we use can, and also we use it for request. Could is in the past of can, which we use for past ability, and sometimes we use in present also. But in another video lecture, we have talked about the usage of modal verbs and the exercises of the course book, where we have recorded this modal auxiliary and the usage. Would we use in future, present, and past? In present also we can use it for request. Would you give me your cameras? Would you also use for past abilities? For example, I would go there. And should then we use in present for advice. When we advise someone in present, we use should. Have to, has to, and had to, and ought to. So have to and has to, we use it in present for present responsibility, and had to we use in past for past responsibility, and ought to also we use for advice like should. May we use for possibility in present, and might also use for possibility in future, and must we use for strong obligation in present. So dear students, that's just short usage of the modal verbs. Now we go to change this into passive, and as we have already discussed in tenses, we will follow the structure over here. The simple structure is that first of all we will have the subject. The structure will be what? Active structure. Any subject over here. Subject will then follow the modal auxiliary. Then there will be modal auxiliary or modal verb. Modal verb then will be followed by basic form of the verb. Basic verb is the first form of the verb. Basic verb, and then it will be followed by object of the sentence. That is the active structure. For example, here we have she can type the letter. This can we took as a modal verb. She can, and type is the basic form of the verb. She can type, and here we have the object, the letter. She can type the letter. So she can type the letter. This sentence now in passive, what will be the passive structure? So we will write over here the passive structure. The passive structure of the sentence will be what? The passive structure will be that first we use what? The same dummy subject will come. The same dummy subject will be here, the subject of the passive sentence. Then we have to use the same modal auxiliary or modal verb. The same can will be can, would be will, should will be should. The same auxiliary verb, and after that what should be added here? Be, and be will be followed by past participle or third form for participle.
Past participle is the third form of the verb. So the letter is the object of the sentence. So we will bring the letter. The letter can, वही मॉडल एक्सिलरी इधर हम इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद हम ये बी लाएंगे. The letter can be typed. The letter can be typed by her. The objective case of she is what? Her. So the same structure which we have already discussed will be followed over here. Auxiliary will not change. I mean that can, and we brought can over here. All the rest of the model auxiliary will be with the same structure in the same way where we put the object of the sentence. Now let's go into the exercises. And another thing that I want to add over here, that is the going to plus verb structure. Sometimes we write, for example, we have this kind of sentence with the structure, she is going to plus verb is in a structure which we use for future decision. She is going to sign the agreement. She is going to sign the agreement. She is going to sign the agreement. यानी इसका मतलब यह है कि वो फैसला कर चुका है कि वो एग्रीमेंट पर मुआहदे पे दस्तखत क्या करे. जब हमने आने वाले टाइम में फ्यूचर में किसी काम करने का फैसला कर चुका हूँ और हम ये फैसला करें कि ये हम मुस्तकबिल में करेंगे, तो फिर हम गोइंग टू के बाद बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के एक स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस बनाते हैं. सो द एग्रीमेंट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. द एग्रीमेंट इज़ गोइंग टू को हम गोइंग टू लगाएंगे. गोइंग टू बी साइंड. द एग्रीमेंट इज़ गोइंग टू बी साइंड बाय हर. तो गोइंग टू वाले सेंटेंस को भी हम इसी तरह, जिस तरह हम मॉडल वर्ब्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक. अब जाते हैं एक्सरसाइज पे जहाँ पर डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं और फिर इसके बाद जो भी सेंटेंसेस हैं इसको करके आगे चलेंगे. ठीक. नाउ लेट्स गो इनटू द एक्सरसाइजेस. सेंटेंस नंबर 1 जो है ये सेंटेंसेस change the following sentences into octave voice. यानी मंदरजा बाला सेंटेंसेस को हम एक्टिव में चेंज करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस जो है she should return the book. Okay. सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 1 इधर जो है वो ये है, she should return the book. ओके. ये सेंटेंस है. इधर देखें ना कि ये she जो है ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, should मॉडल वर्ब है, return बेसिक वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. आप क्या करते हैं कि वही ऑब्जेक्ट को इधर ला के डमी सब्जेक्ट बनाएंगे. द बुक इज़ द ऑब्जेक्ट. द बुक शुड को शुड ही लिखेंगे. द बुक शुड और इधर बी लगाएंगे. द बुक शुड बी रिटर्न्ड. रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या है? रिटर्न. द बुक शुड बी रिटर्न्ड बाय हर. द बुक शुड बी रिटर्न्ड बाय हर. तो इसी तरह ये सेंटेंस हमने चेंज किया. नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है वी मस्ट राइट टू हिम. क्या? वी मस्ट राइट टू हिम. वी मस्ट राइट टू हिम. नाउ लुक ओवर हियर टू द सेंटेंस. वी सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल वर्ब है और राइट बेसिक वर्ब है और हिम जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. तो इसको इधर डमी सब्जेक्ट बनाएंगे. क्या करते हैं? हिम को ही मस्ट बी रिटन टू बाय अस. ही मस्ट बी रिटन टू बाय अस. वी का ऑब्जेक्टिव केस अस. सो these two sentences are positive and we change these two sentences into active, passive.
So now the next two sentences are also of modal verbs, and these two sentences are negative, but the modal verb is changed, and that is with have to and can. सेंटेंस नंबर 3 जो है, सेंटेंस नंबर 3 इधर क्या है, शी डजंट हैव टू, शी डजंट यानी डज नॉट, शी डज नॉट हैव टू, शी डज नॉट हैव टू टेक एग्ज़ाम, शी डज नॉट हैव टू टेक एग्ज़ाम, यानी इस सेंटेंस का मतलब है कि उसे एग्ज़ाम नहीं देना है। तो वही स्ट्रक्चर को इधर हम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, शी और ये सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव एक्सिलरी है, यानी सिंपल एक्सिलरी है नेगेटिव का, और ये मॉडल वर्ब है या मॉडल एक्सिलरी है। मॉडल वर्ब है, टेक बेसिक वर्ब है, और एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट है को इधर वही तरीक़ेकार अपना के ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम सिंगुलर है तो वही डजंट लिखेंगे, एग्ज़ाम डजंट हैव टू मॉडल वर्ब है। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, बी, एग्ज़ाम डजंट हैव टू बी टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन है, बाय हर, एग्ज़ाम डजंट हैव टू बी टेकन बाय हर। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 जो है, 4 नंबर जो सेंटेंस है इधर वो नेगेटिव है, यू कांट डू इट अलोन। सेंटेंस है यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट अलोन, ओके, ये सेंटेंस है। और इधर बी, ये यू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कैन मॉडल वर्ब है, और डू बेसिक वर्ब है, और इट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक। एलोन तो वो एडवर्ब है, इसको अपनी ही जगह छोड़ देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे ना, सो इट कैन नॉट, वही नॉट लगाएंगे, कैन नॉट बी, डू का थर्ड फॉर्म डन है, इट कैन नॉट बी डन बाय यू एलोन, बाय यू एलोन, इट कैन नॉट बी डन बाय यू एलोन। सो ऑब्जेक्ट जो है इधर, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बनाएंगे और एलोन को अपनी ही जगह छोड़ देते हैं। तो ये 2 सेंटेंसेस जो है ये भी मॉडल वर्ब्स हैं और हैव टू और कैन के साथ, तो इसको भी हमने इसी तरह चेंज कर पाए। द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 एंड नंबर 6 जो है ये भी मॉडल वर्ब्स की वही सेंटेंसेस हैं, और इधर मॉडल वर्ब की ये सेंटेंस नंबर 5 जो है ये इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस नंबर 5 क्या है, इंट्रोगेटिव। डज शी हैव टू, डज शी हैव टू प्ले, डज शी हैव टू प्ले हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच वो लड़कियों का जो खेल होता है, हड़ी चढ़पा कहते हैं, कोई और नाम है इसका उर्दू में। तो डज शी हैव टू प्ले हॉपस्कॉच, क्या वो हड़ी चढ़पा, क्या वो हॉपस्कॉच खेलती है। तो इस सेंटेंस को इधर देखिए कि ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन सब्जेक्ट जो है ये शी है, हैव टू मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, और प्ले जो है बेसिक वर्ब है, और हॉपस्कॉच सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो तरीक़ेकार वही ही होगा कि डज को हम इधर ही लगाएंगे, डज, और हॉपस्कॉच उनके ऑब्जेक्ट हैं, हॉपस्कॉच को इधर लाएंगे, डज हॉपस्कॉच, और हैव टू है, हैव टू का लगाएंगे, डज हॉपस्कॉच हैव टू बी, और बी लगाएंगे, प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, डज हॉपस्कॉच हैव टू प्लेड बाय हर। तो इधर सेंटेंस को हमने इसी तरह चेंज किया। द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 जो है, सेंटेंस नंबर 6 ये भी इंट्रोगेटिव का है, और ये है वुड यू पे मी सम मनी, वुड यू पे मी, वुड यू पे मी सम मनी, वुड यू पे मी सम मनी, वुड यू पे मी सम मनी। तो इधर देखें ना, ये वुड यू पे मी सम मनी, तो इधर हम क्या करते हैं, वुड को अपनी ही जगह छोड़ देते हैं, यू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, प्ले वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, एंड सम मनी बी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है।
चूँकि सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैंने पहले भी आपको बता दिया. वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. वुड यू पे मी सम मनी. वुड, तो सम मनी को हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे इधर. वुड सम मनी, वुड सम मनी बी पेड, बी पेड, would some money be paid to me by you. Dear students, as I have already discussed that direct and indirect object, I will have a separate lecture about direct and indirect object. However, I prefer to bring the direct object. Me is indirect object and D is some money is direct object. So I brought direct object as the dummy subject of the passive. In the sentence number 7 और number 8 जो है ये information questions है along with modal verb. Modal verb में ये information question है. So sentence number 7 जो है sentence number 7 है where should ये question इसी तरह का information question है. Where should I keep the book? Where should I keep the book? Where should I keep the book? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो सब्जेक्ट को हम पाएंगे I, ये सब्जेक्ट है, keep वर्ब है, the book ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, should मॉडल वर्ब है और where एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्वेश्चन AWH क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है. तो क्या करते हैं इधर. सो वेयर को अपनी ही जगह लगाएंगे, वेयर, ठीक. द बुक ऑब्जेक्ट है, वेयर द बुक. शुड को शुड लगाएंगे और इसके साथ बी, वेयर द बुक, सॉरी वेयर के बाद हम एक्सिलरी लगाएंगे, मॉडल एक्सिलरी. वेयर शुड, where should the book, ये ऑब्जेक्ट है, where should the book be kept by me. Where should the book be kept by me. तो सेंटेंस नंबर 8 जो है, how could he fix the car. For example, how could he fix the car. सो इसको वही तरीक़ेकार अपना के इधर ये ही जो है सब्जेक्ट है, फिक्स वर्ब है, द कार ऑब्जेक्ट है और हाउ और कुड को इसी तरह हम अपनी ही जगह इस्तेमाल करते हैं. हाउ कुड द कार बी फिक्स्ड बाय हेम. तो इस सेंटेंस को अगर हम इधर देखें, वेयर शुड आई कीप द बुक, मुझे किताबें कहाँ रखना चाहिए. और फिर जो इसकी पैसिव है तो पैसिव का बी है ट्रांसलेशन होगा, बुक्स मेरे ज़रिए या मेरे वास्ते कहाँ रख जाना चाहिए. हाउ कुड ही फिक्स द कार, वो गाड़ी को कैसे फिक्स कर सकता था. एंड हाउ कुड द कार बी फिक्स्ड बाय हिम, उसी के ज़रिए गाड़ी को कैसे ठीक किया जा सकता था. सो that were the sentences from active to passive. Now we have some passive sentences और इस passive sentences को हम convert करते हैं active में. तो question है change into active voice. passive में लिखे गए हैं. तो question क्या है, change into एक्टिव, चेंज इनटू एक्टिव, ये हम अब एक्टिव करते जाएंगे, ठीक. सो फर्स्ट सेंटेंस जो है दे, सेंटेंस नंबर 1 जो है, सेंटेंस नंबर 1 इधर जो है ये है they can be punished, they can be punished
for this by the teacher. by लगा के by the teacher के आपके लिए थोड़ा सा फिर सब्जेक्ट ढूंढना आसान हो जाए. सेंटेंस नंबर 2 जो है टू बी इसी तरह है. दे कैन बी पनिश्ड फॉर दिस बाय द टीचर. she should be relieved of her duties. She should be relieved of her duties. by लगा के इसको फिर सब्जेक्ट हम ढूंढते हैं. by the boss. ठीक है. अब इन दोनों सेंटेंसेस को अब थोड़ा सा इसके बारे में सोच ले. अगर इसमें से हम बाई को हटा दें, दे कैन बी पनिश्ड फॉर दिस, यानी उनको इसके लिए सज़ा दी जा सकती है. शी शुड बी रिलीव्ड ऑफ हर ड्यूटीज़. उसको अपने ज़िम्मेदारियों से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए. बाय द बॉस के ज़रिए. बाद में फिर हम बॉस को अगर ऐड करें तो ये फिर इसकी मीनिंग इस तरह होगा. दे कैन बी पनिश्ड बाय द टीचर. सो सेंटेंस नंबर 1 जो है टीचर चुन के ऑब्जेक्ट है द टीचर, तो हम लिख सकते हैं द टीचर कैन पनिश. The teacher can punish them. The teacher can punish them for this. The teacher can punish them for this. और इसी ही तरह इस सेंटेंस में she should be relieved of her duties by the boss. चूँकि boss इसका सब्जेक्ट है, सो तो हम फिर राइट कर सकते हैं the boss should relieve her of her duties. So we change the sentence from passive into active. So एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि फिर हम क्या करते हैं. एक्टिव स्ट्रक्चर में वही तरीक़ेकार अपनाएंगे कि हम ऑब्जेक्ट जो है पैसिव का, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. होप यू विल हैव गोटन डियर स्टूडेंट्स द आइडिया ऑफ मॉडल वर्ब्स. कमिंग टू द सेंटेंस नंबर 3 एंड नंबर 4. सेंटेंस नंबर 4 जो है ये है सेंटेंस नंबर 3. थर्ड नंबर सेंटेंस जो है द इंटरव्यू must be conducted by the selection committee. Interview must be conducted by the selection committee. और सेंटेंस नंबर 4 the students might be asked to leave. Student might be asked to leave by the teacher. So changing these sentences, the interview must be conducted by the selection committee. So the object of the sentence is what? The selection committee. The selection committee must conduct the interview. Okay. The next sentence, the students might be asked to leave by the teacher.
द टीचर, ये सब्जेक्ट द टीचर है, सो टीचर को इधर ही रखेंगे. द टीचर might ask the student to leave. Might ask the students to leave. Okay. So sentence number 4 in number 3 in number 4. Sentence number 5 and number 7. Now we have the same structure to follow over here too. And sentence number 4 says what? Okay, so the notice has to be issued by the authority. Sentence number 5, whatever we have over here, that is sentence number 6. Sentence number 6, they have to be taken. They have to be taken. They have to be taken in confidence. They have to be taken in confidence by the authority. By the authority. They have to be taken in confidence by the authority. यानी हुकाम जो है उसको एतमाद में लिए जाना चाहिए. So first sentence number 5 को आता है, the notice has to be issued soon by the authority. The authority has to issue the notice soon. And sentence number 6, they have to be taken into confidence by the authority. The authority, ये authority भी इधर हम subject लेते हैं. The authority has to take them in confidence. Them in confidence. A change occurred over here, dear students. So there we have to, and here have to change into has to. It is because of the subject. When the subject is singular, then we use has to. Remember that with the singular subject like he, she, it, authority, we use has to. In plural subjects like you, they, students, etc., we use have to. So have to here changed into has to. In the last two sentences, sentence number 7 and number 8. Sentence number 7 we have here. That is of the letter ought to be signed. The letter, sentence number 7. The letter has the letter. Sentence number 7 जो है the letter ought to be signed. The letter ought to be signed. Ought to be signed. The letter ought to be signed by the manager. The letter ought to be signed by the manager. The letter ought to be signed by the manager. So sentence number 7. Sentence number 8 को जाते हैं. Sentence number 8 जो है the room is going to be painted. वही going to वाले structure है. The room is going to be painted. The room is going to be painted. यानी कमरे को पेंट किया जा रहा है या किए जाने ही वाली है. By the painter. By the painter. The painter इसका जो subject है, इधर डमी इधर object है, इसको लेते हैं. अब क्या करते हैं, वही the manager subject है तो the manager को इधर रखेंगे. The manager ought to sign. The manager ought to sign the letter. So letter इसका इधर डमी सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट होंगे. The room is going to be painted by the painter. The painter ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे. The painter is going to paint the room. Is going to paint the room. Okay, the painter is going to paint the room. So
Dear students, I hope you will have gotten the idea. Please like, subscribe, click the bell icon and pass comments on our videos so that we can come to know that how did you benefit from our lectures. So the next lecture would be about imperative sentences, and we will discuss imperative sentences. So that was all about modal verbs, and that's all from over here, Oxford Media Services, Alpha Series English with A. W. Walid. Tata, bye bye.